एटलीस्ट 95 पीपल कंफ्यूज्ड होंगे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। इफ योर कैपिटल इज लो, योर स्किल हैज टू बी हाई। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तभी आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। I can guarantee your money will become zero. I have made it many times zero in the past. But अगर आप स्किल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आपको याद रखना चाहिए आपकी फाइट हो रही है उन लोगों के अगेंस्ट जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल की। आप लोगों में से मैं 100% श्योर हूं, अगर देर आर 100 पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, आप में से 99 और एटलीस्ट 95 पीपल कंफ्यूज्ड होंगे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल सा मेथड डिराइव किया है और उस मेथड के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई स्टाइल। और मुझे ये समझने में करीब 10 साल लगे थे, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफाइड स्टाइल, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बन जाए जिससे कि आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकें। तो शुरू करते हैं और आज का वीडियो बहुत फोकस्ड रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई माय ट्रेडिंग स्टाइल। मैं जहां तक समझती हूँ, मेरे हिसाब से 2 या 3 तरीके के लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। ज्यादातर लोग वो आते हैं जिनको पैसे कमाने का डेस्परेशन होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ डेस्परेशन टू अर्न मनी। दोज आर द पीपल हु कम टू द स्टॉक मार्केट। देन second kind of people are those who want to have a passive income. They have a stable job, they have some extra amount of money and they want to create a passive income. So ये दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनके पास एक अच्छा जॉब होता है और वो एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तीसरे तरीके के लोग ये होते हैं जो कि हाई नेटवर्थ होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और उनको ये समझ नहीं आता कि इस पैसे को कैसे यूज किया जाए, इस पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए। So they want to get some, passive income from the stock market. Now, अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में। So, 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं by which you can trade in the stock market. First one is कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने एक स्टॉक खरीदा, उसके फंडामेंटल्स को चेक किया और आप उसको लेके बैठ गए। फिर वो स्टॉक नीचे जाता है तो आपने एक्यूमुलेट कर लिया या आपने जो भी किया, आप उस स्टॉक को कम से कम 10 से 15 साल तक या 5-6 साल तक होल्ड करके बैठे हो। ये फर्स्ट स्टाइल हो गया, राइट। और या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलर हो। मतलब ये नहीं कि आप इस वीक के ऑप्शन सेल कर रहे हो या इस मंथ के ऑप्शन सेल कर रहे हो, आप 1 साल तक के ऑप्शन सेल कर रहे हो। मतलब आपको डे टू डे हैपनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। That's first style. Second style is momentum trader. Momentum trader is the one I prefer. कि आपको पता लग रहा है कि एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है और ये ब्रेकआउट कुछ 3-4-5 दिन रहेगा और आप उस मोमेंटम ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करते हो छोटा पैसा, या अगर आपको इंट्राडे मिलता है 10-15% तो आप लेके बाहर आते हो, या आप 5-6 दिन होल्ड करते हो, हफ्ता 10 दिन होल्ड करते हो या महीना होल्ड करते हो, and once you get about 15-20% or 30% profit, you are out. That's my style. And the third one is a scalper. A scalper is basically an intraday trader. उनके ट्रेड्स जो है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटे के लिए ही होते हैं। वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वेट करते हैं और फास्ट प्रॉफिट बुक करते हैं। नाउ योर ट्रेडिंग स्टाइल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 3 things. What are those 3 things? योर कैपिटल, आपके पास कैपिटल कितनी है, पैसा कितना है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है एंड आपके पास स्किल्स कितनी है। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट if your capital is low, your skill has to be high. If your capital is low, your skills have to be 100% high. And if your capital is high, even low skills will be fine, right? So it depends upon your capital, it depends upon your experience, it depends upon your skills. These are the 3 things on which your trading style depends. Now, suppose you are a momentum trader. Momentum trader means that the momentum is coming in the market.
Like when it comes to investor, you don't need much skills. You just need to understand the fundamentals. Take entry. अगर स्टॉक नीचे जाता है आप थोड़ा और accumulate करिए और उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करिए। अब बात आती है मोमेंटम ट्रेडर की। मोमेंटम ट्रेडर क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोमेंटम ट्रेडर का मतलब होता है, सपोज ये एक स्टॉक है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, सम रेंज बाउंड मार्केट में है। सपोज एक दिन ये अपने रेंज को ब्रेक करता है विद बिग वॉल्यूम्स, this is called a momentum, right? Momentum means the price is suddenly moving with a faster pace. This momentum trading actually requires higher skills, higher than your investment skills. You need more experience and you need moderate capital. मतलब आप अगर इंट्राडे में ऐसे मोमेंटम निकाल रहे हो या 3-4-5 दिन के लिए निकाल रहे हो, तो आपके पास कुछ छोटी कैपिटल भी है। Every time you get about 10% move, 10% movement, you book profit and come out. तो छोटी कैपिटल, मॉडरेट कैपिटल पे भी, व्हेन आई से मॉडरेट कैपिटल, 40-50,000 पे भी बात बन जाएगी आपकी। मतलब 50,000 अगर आपकी कैपिटल है और आपने 2 मोमेंटम स्टॉक्स में लगाया है, अगर एक में 10% का स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरे ने आपको 30% का मूव दे दिया, तो स्टिल आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होता है मोमेंटम, बट इसके लिए आपको आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोगों के पास स्किल्स नहीं होती है। स्किल जब मैं बोल रही हूँ उसका मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए ऐसे ब्रेकआउट्स को। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो रही है, कहाँ पे डिलीवरी हो रही है, कहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, और कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस है, और कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तभी आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस इन चीजों में, मोमेंटम ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, यू नो, यू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट। प्राइस को आपको रीड करना आ जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट दिया था। जेके लक्ष्मी सीमेंट ऊपर गया था और गिरते गिरते नीचे आया था, और मैंने बोला था इस जगह के ऊपर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट टू गो अप, but I still believe it will be going up. Let me take you to the graph and show you. So this is JK Lakshmi Cement. अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे 31 अक्टूबर का जाके, मैंने आपको बोला था कि आज के दिन जो कैंडल बन रही है, कुछ वैल्यू थी कुछ अराउंड 550 की, और मैंने आपको बोला था कि इसमें कोई साइन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर आपको कल ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिलती है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक ने 550 के ऊपर से चलने के बाद सीधा 888 का हाई लगाया, almost like 330 points, and which is almost like 65-70% का move. So this is basically because I can read the price, I can connect those dots, like delivery percentage कितनी है, या फिर किस तरह की ट्रेडिंग हुई है इसके ऊपर, या किस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं, वो सब मैं कोलेट कर सकती हूँ, वो मैं सब कनेक्ट कर सकती हूँ। दैट इज व्हाई आई कुड टेल यू कि यहाँ पे जो है, आप वीडियो देखिएगा मेरा 31 अक्टूबर का जाके, और मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है टुवर्ड्स द एंड। सो अगर आपके पास, आपको इस तरह की मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास स्किल्स होनी जरूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। छोटी कैपिटल से काम चल जाएगा, बहुत बड़ी कैपिटल की आपको जरूरत नहीं, कि आपको ये नहीं चाहिए कि 50 लाख या 1 करोड़ की कैपिटल होनी ही जरूरी है। तो अगर आपने इसमें 50,000, लाइक अगर आपके पास 100 शेयर्स भी होते तो आपको इसमें 30-40 हजार रुपए का प्रॉफिट होता था, और वो भी विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ में आपको 30-40 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता, विच इज अ huge return. So momentum trading, as I told you, a lot of you want to do momentum trading, but I'm doubting whether you have skills. I'm doubting whether you have experience. But of course, as long as I am working in the stock market, I'll keep filtering these kind of stocks for you, and you can trade. But it's important for you to understand and develop those skills. अगर आप अपने आप skills develop करोगे, I mean there are different feeling when the power is in your hand. अगर आप किसी और के बोलने पे ट्रेड करते हो, आई फील, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मुझे अपने आंखों से प्राइस को देखना होता है। सो डेवलप दो स्किल्स। अब लास्ट कैटेगरी आती है स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर की। इंट्राडे ट्रेडर
trading could be in index options or index or futures, or it could be the breakout stocks, stocks options, breakout stock futures. You need extremely high skills. अगर आपकी skills high है, आपकी capital छोटी हो सकती है. Even if you come with 20,000 rupees, you will be able to make money. In our forum, in mentors forum, we have a mentor called Yogesh. Every week he just deploys 20,000 rupees and he converts them into 1 lakh rupees every week and takes home, and again 20,000 and like that. Even we have done 30,000 to 5 lakh in less than 1 month in 20 trading sessions. We've done it many times in many accounts, in my account, in my daughter's account, like that. So what I want to tell you is the money can be made. There is no doubt about it. But provided you have skills, you have experience. When I say skill का मतलब होता है fast execution, fast identification, fast way of identifying that the breakout is coming, and then fast execution of the trade. This is what called is the skill. Then I say your experience. Experience means you should know where the breakout is going to come. What kind of price will lead to the breakout. So that comes when you have experience, when you have spent long hours reading the chart. That's when you get the experience. And capital can be low. When your experience is high, when your skills are high, your capital can be low. You know what I have come across? Most of the people have low capital and they want to do the highest skill trading in the market. They have low experience, low capital, and they want to do the high skill trading. Like they want to trade back nifty options. I can guarantee your money will become zero. I have made it many times zero in the past. Now I have understood my style is basically buying stocks, holding them for some time, or my style is basically long-term option selling, where I'm just not bothered what's happening in the market day by day. Like it was yesterday drop and today also drop, and few days back a huge move up. It doesn't matter to me because my style is basically long-term option selling. So these are, this is how you need to identify. You need to identify कि how much time you have. आपके हाथ में time कितना है. अगर आपके पास पूरे दिन का समय है तो अपनी skills develop करिए, अपनी experience को develop करिए. छोटा capital है तो छोटे trade करिए. अगर 20,000 की capital है, doesn't mean you need to spend the entire 20,000 rupees. अपने skills को आप paper means आपको fast execute करना है, तो अपनी computer skills को आप develop करिए. How would you punch fast orders? ये सब चीजें आप जब develop कर लोगे, then you should deploy. Even if you deploy less capital, you'll be able to make money. But अगर आप skill भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आपको याद रखना चाहिए आपकी फाइट हो रही है उन लोगों के अगेंस्ट जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, करोड़ों रुपए जिनके पास है, और आज अगर सपोज ट्रेड उनके अगेंस्ट चला जाता है, वो और पैसा डंप कर देंगे मार्केट में टू सेव देयर कैपिटल. आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है. अगर आप ये बात नहीं समझेंगे, you will lose your capital, you will empty your account not once, twice, but every time. So understanding your style is extremely important. So let me conclude. If you have good amount of money, when I say good amount of money means more than 50 lakhs or more than 20 lakhs, you can do the option selling or you can do positional trading. That to be into 2 or 3 different stocks. In case you have lesser amount of money, let's say you have 5 lakh rupees or above 1 lakh rupees, you can do momentum trading. Like you invest when the breakout is coming, but you need to know about the market. आपको market के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. And अगर आपके पास पैसा कम है, then my request to you is spend good amount of time in the market. Develop skill, develop experience, then no one can stop you from making money. So don't do this blunder that you start putting your entire capital in the market without understanding the dynamics. So important is to learn about your style. And how do you know that this style suits me? Like I have maintained a whole journal. I've seen my success rate is highest in positional trading and in option selling. I've made entire statistics. I've made a pattern
to watch, when I do intraday trading, what are my outcomes? When I do positional trading, how many times I have been profitable? When I do option selling, how many times I'm profitable? Let me tell you, when I have sold options, when I have bought positional stocks, I have been 100% profitable. It's only when I do intraday or when I do option buying positional, that's when I fail many times. So again, recognizing your style will lead you in the right direction. But if you don't recognize, I can assure you many times your entire account will become zero. So with this, I'll be signing off, hoping this imparted some kind of knowledge to you or understanding about it. एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपका स्टाइल क्या है? What style do you have? आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं? Are you a momentum trader? Are you a scalper? Are you an investor? What kind of capital you have? Write it in the comment box. See, there is nobody knows about you. So write that my capital is this and I like this. My capital is 50,000 and I like momentum trading. Or my capital is 1 lakh rupees, I like investment. My capital is 10 lakh, I like option selling. So write that in the comment box so that all of us can learn, from each other. कि और कुछ गलत होगा तो we definitely can, probably in the next video, I can talk about it, that you have low capital. So please spend a lot of time in upgrading your skills like that. So please write it in the comment box, and thank you all for watching this video. All the best, take care, and see you in the next video.